Hi Parth, hi Shubham. Yeah, I know it is nice, but it is thinning. मैं अच्छा खाना नहीं खाती ना, जॉन्ग खाती हूँ ना इसलिए. It's okay. मैंने सपने में किसी को मरते हुए देखा. It's okay, Ma. Divya Deshmukh helping her fan. तुम्हारा ना खुद ही ब्लॉक हो गया. किसी का मैसेज ब्लॉक हो गया, एक का. आई डोंट नो. हाय चाहल. आई थिंक तुम्हारा ना जो वर्ड तुमने टाइप किया ना वो ब्लॉक्ड है, इसलिए तुम नहीं लिख पाए. कुछ कुछ वर्ड्स ब्लॉक्ड है लाइव सेशन के लिए. शायद तुम्हारा वर्ड उसी से रिलेटेड था, इसलिए तुम ब्लॉक हो गए ऑटोमेटिकली. और तुमने जानबूझ के गंदा वर्ड लिखा था शायद. और तुम लोगों के लिए मैंने बाल नहीं खोला है. माइंड दैट. मेरे पीछे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. आई थिंक वो किसी चीज़, मैंने हेयर टाइटली टाई किया या फिर कोई और रीज़न हो सकता है. मुझे लगता है कि माइग्रेन भी हो सकता है. मैं गूगल पे भी सर्च कर रही थी क्यों यहाँ पीछे ऐसे ना बैक के साइड पे
बैक हेडेक माइग्रेन की वजह से होता है शायद, इसके कारण था। मुझे लगा कि मैंने हेयर जोर से टाई किया ना इसलिए। यूट्यूब पे सो टॉक्सिक है ना एक तरह से तो, लेकिन कोई बात नहीं, पॉजिटिव साइड को देखते हैं। थर्टी मिनट का रख देती हूँ ओके स्लॉट। नाउ आई एम विजिबल ओके। हाय आदर्श, कितने दिनों के बाद देखा। हाय शुभम। कैसे हो तुम लोग। This condition characterized by pain in the back of the head and neck. Okay. Caused by irritation or inflammation of occipital nerve. This nerve runs from the top of the spinal cord through the scalp, which can feel like sharp shooting, throbbing pain, and may be accompanied by sensitivity to touch or light. Sharp shooting or throbbing pain in the back of the head and neck. Pain may radiate to the scalp, forehead, or behind the eyes. Tumors. अभी तो मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। हाई स्क्राइबल स्क्राइबल स्क्रिबल स्क्रिबल स्पार्क्स। हेलो सेड हाय, व्हाट आर यू स्टडीइंग नाउ। आज क्लास के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10 का है वैसे ही। शिरो लैपटॉप के ऊपर सो गया था ना, इसलिए अभी फंक्शन की के बिना ना नहीं चलता है ये। This is so hard, isn't it? It is. It is. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heating in the absence of O2. Roasting helping the presence of O2. Sulfide or roast. Reduction to metal. Purification of metal.
एनरिचमेंट ऑफ ओर्स स्टार्ट करिए, मैं टाइमर लगा देती हूँ ना। शुभम, आर यू देयर? लाइव स्टेबल नहीं रहा ना? आई थिंक वो गंदे लोग चले गए ना। आई हैव टू अनटाई माई हेयर। किसी ने कुछ गंदा लिख दिया था ऊपर, इसलिए मुझे टाई करना पड़ा, लेकिन आई एम अनटाइंग इट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बैक साइड में, हेडेक शायद। अभी भी सही नहीं हुआ शायद, या फिर हो गया है, आई डोंट नो, लेट मी चेक। ओके, नाउ आई एम विजिबल। The metals low in activity series are very unreactive. The oxide of this metal can be reduced metals by heating alone. For example, cinnabar HgS is an ore of mercury, which when it is heated in air ma heat kare unke answer, it is first converted into mercuric oxide HgO. Mercuric oxide is then introduced to mercury on further heating. Sulfide ore HgS, okay. Sulfide ore roasting, metal refining. 3O2 plus heat, 2HgO, SO2 gas, okay. O2. Similarly, copper, which is formed as C2S in nature, can be obtained from the ore by just heating in air. CuO plus Cu2S. फर्दर हीट करने से ये होगा इसका ना फर्दर simple heating. What will you get when you heat copper oxide? When heated, copper oxide is black, decomposed into copper 1 oxide, which is red in oxygen gas. The reaction typically occurs at temperature. Copper 1, copper को valency 2 वाला 1 बन जाए, copper oxide बन जाए. Heating. Cu2O1 ना, Cu2O. Extracting metal in the middle of the activity series. Oh, this is so painful. Extracting metal in the middle of the activity series. The metal in the middle of the activity series, such as iron, zinc, lead, copper, are moderately reactive. They are usually present as sulfides or carbonate in nature. It is easier to obtain a metal from its oxide. It is easier to obtain a metal from its oxide.
as compared to sulfide and carbonate. Therefore, prior to reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide. The sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. The process is known as roasting. The carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limited air. This process is known as calcination. The chemical reaction that takes place during roasting and calcination of zinc ore can be shown as follows as follows: roasting 2 ZnS zinc sulfide plus 3O2. Oxide gains. The metal oxides are then reduced to the corresponding metal by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. The metal oxides are then reduced to the corresponding metal by using suitable reducing agents such as carbon. Reducing agent, a substance that donates an electron in chemical reaction causing another substance to reduced. अर्को सब्सटेन्सलाई रिड्युस गर्छ. रिड्युसिङ एजेन्ट हो. अर्को सब्सटेन्सलाई के गर्छ? रिड्युस गर्छ. रिड्युसिङ एजेन्ट यसलाई रिड्युस गर्छ, अर्को सब्सटेन्सलाई रिड्युस गर्छ. धीरज 12th की हो क्या? ये तो क्लास 10th का बुक है. क्या बोल रहे हो तुम? Here remember me, हाँ मुझे पता है. तुमने मुझे फर्स्ट डांटा था, फिर मैंने बोला कि ऐसा मत बोलो ना, मुझे मेरा सिलेक्शन ज़रूरी है. फिर तुम 20 रुपीज़ दे के भाग गए थे. XP250T. आई रिमेंबर यू. यार मेरे लिए पढ़ नहीं रही हूँ, ये क्लास के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. The metal oxides are then reduced to the corresponding metal by using suitable reducing agent, a substance that donates an electron in chemical reaction causing another substance to be reduced. रिड्युसिङ एजेन्टले के गर्छ भन्दा त अर्को सब्सटेन्सलाई रिड्युस गर्छ, खुद चाहिँ के हुन्छ? अक्सिडाइज हुन्छ. रिड्युसिङ एजेन्ट अर्कोलाई अक्सिडाइज गर्छ, आफै के हुन्छ? रिड्युस हुन्छ. अक्सिडाइजिङ एजेन्टले अर्कोलाई रिड्युस गर्छ, आफै चाहिँ के हुन्छ? रिड्युसिङ एजेन्ट. अर्कोलाई अक्सिडाइज गर्छ, आफू चाहिँ के हुन्छ? अर्कोलाई रिड्युस गर्छ, आफै अक्सिडाइज हुन्छ. रिड्युसिङ एजेन्ट अर्कोलाई रिड्युस गर्छ, आफै अक्सिडाइज हुन्छ. अर्कोलाई रिड्युस, आफै अक्सिडाइज. अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो नि त. अर्कोलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्छ, आफै चाहिँ रिड्युस हुन्छ. अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अर्कोलाई अक्सिडाइज, आफै रिड्युस. ये क्या हुआ? तुम सब लोग हंस क्यों रहे हो? The metal oxide are then reduced corresponding metal by suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide heated with carbon, is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc, Zn plus Cu. Zn plus Cu, carbon monoxide. You are already familiar with the process of oxidation and reduction explained in first chapter. Okay. Obtaining metals from their compound is also a reduction process. Obtaining metals from their compounds. Reduction process.
Beside using carbon coke to reduce metal oxide to metal, carbon like even coke bandirsa. Sometimes displacement reaction can also be used. Okay, highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agent because they can displace metals of low reactivity from their compounds. For example, when magnesium oxide is heated with aluminium powder, following reaction takes place. Fermi process for joining railway tracks. अब छपरी खुद को ही छपरी बोल रहा है। तूने तो बोला था कि तुम चेंज हो गए हो श्री। Can you identify the substances that are getting oxidized and reduced? MnO2. Displacement reaction ले गर्छ अनि के हुन्छ कार्बन पनि युज गर्दा पनि हुन्छ कार्बनलाई के भन्छ कोक भन्छ Can you identify the substances that are getting oxidized and reduced? Oxidized त्यो हुँदैछ जसमा aluminium oxidized reduction reduced MnO2. These displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metal are produced in a molten state. सच्ची में ऐसा होता है क्या? नहीं पता मैंने नहीं पता. These displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. In fact, the reaction of iron oxide Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks with cracked machine parts. This reaction is known as thermite reaction. 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 My eyes are aching. Metal produced in the molten state In fact, the reaction of iron oxide Fe2O3 with aluminium is used Fe2O3. The reaction used to join How do you separate iron and aluminium oxide in thermite reaction for what? I don't know. यहाँ से मुझे फिर से लिखना पड़ेगा ना for joining the railway track TRACT. In the thermite reaction used for welding railway tracks, iron and iron are separate due to the difference in density and the reaction exothermic nature. The reaction produces molten iron and aluminium oxide. अच्छा धूलो निस्किन्छ aluminium oxide को. For the lighter aluminium oxide, sac floats on to the top. Got it.
Density and melting point. The reaction produces molten iron and aluminum oxide. Heat generated milled both substances, allowing to separate based on their physical properties. Okay. Thermite reaction. Molten iron. Fe. Fe2O3. Fe2O3. Okay, aluminum oxide. Extracting metal towards the top of the activity series. Thermite process for joining railway tracks. I'm having some sort of pain. 16 तक ही निकालना चाहती हूँ इसका. Extracting metal towards the top of the activity series. The metal high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compound by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to the respective metal. The metal high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxides. Okay, let's ask the question to Google. Why carbon can't reduce the oxide of sodium? Carbon can't reduce sodium oxide because sodium is more reactive than carbon, meaning it has a stronger affinity for oxygen and will not be displaced from its oxide by carbon. More reactive. Sodium is more reactive than carbon. Sodium has greater affinity for higher. Sodium has higher or greater affinity for oxygen than carbon. Carbon cannot reduce sodium oxide because sodium is more reactive than carbon. Melting, it has a strong affinity for oxygen. From its oxide, carbon can't displace. Displace the carbon displace करने सब देना खिलाई. Carbon can't displace the oxide by carbon. Carbon can't displace the oxygen. From highly reactive, carbon can't displace the oxygen from highly reactive oxide, metal oxide. Metals oxide. Okay.
The metal high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from the compound by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxide of sodium, magnesium. Carbon cannot reduce the oxide of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to the respective metal. This is because the metals have more affinity for oxygen than carbon. यहीं पर लिखा है मैंने बार बार मैं गधेड़ी. Because these metals have more affinity for oxygen than carbon. More affinity for oxygen, have more affinity for oxygen than carbon. These metals are obtained by electrolytic reduction. Electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium, calcium are obtained by the electrolysis of molten chloride. देखो कैथोड एनोड. एनोडमा नेगेटिभ वाला चार्ज जान्छ, क्लोराइड जान्छ. क्याथोडमा पोजिटिभ मेटल्स जान्छ. मोल्टन क्लोराइड, electrolysis of their molten chloride. Sodium, magnesium and calcium, electrolyte reduction. For example, sodium, magnesium, electrolytic reduction. Electrolysis of the molten chloride. The metals are deposited at the cathode, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode, the positive charged electrode. The reaction are at cathode. Na plus एक इलेक्ट्रॉन पाएगा, Na1 Cl में यतानिर Cl माइनस छ दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरे Cl2. Aluminium is obtained by the electrolytic reduction of aluminium oxide. These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of the molten chloride. So it's okay ma. Molten chloride, the metals are deposited at the cathode, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrode. The reaction are cathode, negatively charged electrode. This is very important. Cathode, the negatively charged electrode, and anode, the positively charged electrode. Very, 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 very important. Cathode and anode. Na plus 1 electron Na, Cl2 plus 2 electron. Similarly, aluminium is obtained by the electrolytic reduction of aluminium oxide. It's okay ma, it's okay. Thermite reaction. रिफाइनिंग ऑफ मेटल करने कोरोजन को बाद में छोड़ देते हैं ना. कोरोजन तो पहले भी पढ़ा है, इसलिए इतना करके कोरोजन को एकदम भूल जाते हैं. भूल भुलैया आते हैं तेरे भूल भुलैया. KKRH Zengi's के शॉर्ट फॉर्म. क्या कर रहा है? Refining of metal. Okay. Electrolysis of molten or pure metal. Refining of metals. The metal produced by various reduction process. Reduction electron add गर्दिन्छ oxygen हटिँदैछ. The metal produced by various reduction process described above are not very pure. The metals produced by various reduction process described above are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining.
Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolytically. In this process, impure metal is made. The impure metal is made the anode and a thin strip anode. Okay. In this process, the impure metal is made the anode. Is made the anode? The impure metal is made the anode and impure metal का anode बना है. The impure metal is made the anode. Correct. Anode. बनाउँछ एनोड इम्प्योर मेटलको बनाउँछ and a thin strip of pure metal is made the cathode. Thin strip of pure metal is made the cathode. A solution of metal salt is used as an electrolyte. A solution of metal salt. Electrolyte. The apparatus is set up as shown in figure 3.12. Okay. Electrolytic refining of copper. The electrolyte is a solution of acidified copper. Electrolytes. Solution of acidified copper. Copper sulfate. Acidified copper sulfate. Okay. Acidified copper sulfate. The anode is impure copper. Anode is impure copper, whereas the cathode is a strip of pure copper. Copper sulfate. Metal salt. On passing electric current, pure copper is deposited on the cathode. Acidified copper sulfate solution tank. Impurities at anode. A solution of metal salt is used as an electrolyte. नहीं ऐसा नहीं हो सकता. Inorganic chemistry नहीं ये inorganic chemistry नहीं है सार्थक. The apparatus वैसे कह सकते हो लेकिन 10 में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और ये नहीं होता. लेकिन तुम हाँ कह सकते हो. अगर ये क्लास 12 में होता तो वो वाला चैप्टर अभी हटा दिया है, मेटलर्जी का पार्ट होता ना, तो हाँ तुम कह सकते हो इनऑर्गेनिक. लेकिन ऐसे कोई सेपरेट नहीं दिया है क्लास 10 पे. A solution of metal salt is used as electrolyte. The apparatus is set up as shown in figure 3.12. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal, an equivalent amount of pure हो गया हम लोग का 30 मिनट. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. An equivalent amount of pure metal. Hi Shreya, wait हाँ मैं कंप्लीट करने ही वाली हूँ. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte, an equivalent amount of electrolyte is deposited on the cathode. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution. The soluble impurities go into the solution, whereas insoluble impurities settles down at the bottom of anode. Anode mud.
the soluble impurities goes to the solution, whereas insoluble impurity settles down at the bottom of the anode and it is known as anode mud. Electrolytic refining. कोरोजन को बाद में देखते हैं ना, फिर हम करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. If you're having trouble with organic chemistry, I suggest going through Bora classes and CRT line by line lectures. Bora, I don't know how to pronounce it. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही तो ऑर्गेनिक है, सबसे ज़्यादा वीक फिजिकल केमिस्ट्री है. जहाँ पर मैथमेटिक्स आ जाती है वहाँ पर मैं फ्लैट हो जाती हूँ, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक का तो हम लोगों ने अगर जीओसी करके रखा है ना अच्छे से, तो सारा मैकेनिज्म समझ में आ ही जाता है. Oh, I mean for inorganic chemistry. Oh, okay, I'll check Sarthak. Thank you. Pounding like a, I don't know what. Define the following term. कर सकते हैं ना. मिनरल्स एक जगह पाए जाते हैं अर्थ के कोर में, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक ही जगह पर पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में. गैंग वो इम्प्योरिटीज़ जो मेटल के साथ चिपके रहते हैं. नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट. ओके, ये गोल्ड भी हो सकता है, और गोल्ड और सिल्वर जाते हैं ना, लेड भी कर सकते हैं शायद. मैथ्स अनीमा एग्जैक्टली. वहाँ पर भी ना एक मुझे ना वहाँ पर प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए मैंने फिजिक्स ही पढ़ना छोड़ दिया. आई नो वो बहुत ही बेसिक है, कोई और स्टूडेंट को बताऊंगी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर व्हाट्सएप पर छोड़ दूंगी, लेकिन मैं भूल गई क्योंकि तब वाईफाई भी नहीं था. तो मैं यहाँ पर कहीं पर मैंने छोड़ के फेंक दिया है इसको. यहाँ तक मैंने पूरा कर लिया है. आई एम सो प्राउड. देखो मैंने इतना सारा कंप्लीट किया. देख, इतना जितना तो किया होगा, जो कि मेरे लिए बड़ी बात है. इतना जितना यहाँ तक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक किया, ये मेरे लिए बड़ी बात है. यहाँ छोड़ो, इसको नहीं देखते. आई नो वो भी वही वाला फॉर्मूला में वो हो गया है, मैं अटक गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं. मैं बाद में ना व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगी, तुम लोग मुझे सिखा देना, या फिर पोस्ट कर दूंगी. पता नहीं कहाँ गया. मैंने हैश टैग लगा के रखा था, यहाँ पर भी लगाया है. हाँ, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया ना, इसलिए मैंने हैश टैग लगा दिया. इधर किधर भी है. विल टॉक अबाउट इट लेटर. सब कुछ पाइनएप्पल स्मेल कर रहा है, क्योंकि एक वो नोटबुक में ना पाइनएप्पल गिर गया था, तो आई थिंक ये ना बहुत दिन हो गया, इसलिए इतना गंदा स्मेल कर रहा है, लेकिन पाइनएप्पल ही स्मेल कर रहा है. नेम 2 metals. ओके, नेम 2 metals which are found in nature in the free state. है ना गोल्ड. हाँ, मैंने सही बोला, गोल्ड एंड प्लैटिनम. अच्छा, सिल्वर भी तो लेस रिएक्टिव है, वो भी तो मिल सकता है ना. प्लैटिनम नहीं, वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है शायद. कॉपर ऑक्साइड एंड सिल्वर ऑक्साइड, ऐसा कुछ. कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो, हाँ यहीं पर तो दिया है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट. Copper and silver are also found in combined state as their sulfide or oxide ore. Okay. A free state. If golds are found in free state, then why do we have to purify them? Even if golds are in free state, I golds नहीं बोला मैंने, gold बोला, gold, GOLD. Gold, silver and platinum occur in free state or native state in nature because they are relatively
Unreactive metals, their low reactivity means they don't easily form compounds with other elements like oxygen, hydrogen, or acid. This stability allows them to exist in pure. Why do gold, silver, platinum? Back space. Why do we need to purify them? To obtain these metals in pure form for various applications. These are the four. Needs to be purified because it can contain impurities like silver, copper, or other base metals. Properties. For certain uses, refining gold ensures it reaches a high level of purity, typically 99.5 or higher, which is preferred for investment, jewelry, and industrial applications. Nice. मुझे 96 एक्सपी ही मिला है. आई थिंक मेरा तो ना डिमोशन होगा इस बार. सेफ्टी जोन में नहीं. मैं रैंक 30 में हूँ. ओ माय गुडनेस. एक सेट में ना 30 स्टूडेंट्स होते हैं. ओके, और मैंने टोटल एक्सपी अर्न किया है 96 और मेरा रैंक के सबसे लोएस्ट पे मैं ही हूँ. 30 स्टूडेंट में सबसे लास्ट में मैं ही हूँ क्योंकि मैंने 2-3 दिन से लेक्चर नहीं देखा ना. और हाईएस्ट पे है 2966 तन्नू कुमारी. मतलब कि मैं सेफ्टी रैंक में भी नहीं, डिमोशन जोन में चली गई हूँ. दिस इज नॉट फनी दो. आई एम स्माइलिंग. कोई बात नहीं, मैं ना पुश करूँगी. अभी तो बस ट्यूसडे ही है ना आज. हाय हीरा नायक. ना आज वेंसडे है. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. मेरे पास 4 दिन है पुश करने के लिए. अगर मैं 4 दिन में भी पुश नहीं कर पाई ना तो मैं लेवल 3 पे हूँ. मुझे 2 पे गिरा देंगे ये लोग या फिर 1 पे चली जाऊँगी. 1 पे चला जाना भी सही है क्योंकि कुछ तो नहीं देखा इस बार. देखते हैं क्या होता है. आज तो मैंने क्या कुछ नहीं किया. आज मैंने एक क्लासेस किया, फिर उसके बाद मैं सो गई. मैं बहुत ही बीमार हूँ. मैंने बोला कि अम्मा को मैं हॉस्पिटल जाऊँगी. अम्मा ने बोला कि हाँ हाँ हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल जाओ. कहीं से तो फर्स्ट हो सोने से. इसको ना मार देते हैं हम लोग. कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है मुझे इस शुभम को. गधेड़ी. हाय निधि. निधि, आर यू देयर? occurrence of metal तो किया ना. how do metals react? हाँ आर यू देयर ये पूछा. यू आर देयर. हाँ हाँ देखा निधि. सेकेंड स्लॉट करे 30 मिनट का. वैसे हम लोगों ने इस बार ब्रेक नहीं लिया ना. कोई बात नहीं. स्लॉट 2. स्लॉट 2 30 मिनट का ही. ओके निधि, तुमने बैच ले लिया क्या? 17 की कब से स्टार्ट होने वाला था ना, या फिर कल है 17th? इट्स ऑलरेडी 3:05. मतलब कि 3 है लेकिन मेरे वॉच ना 5 मिनट आगे है. वॉच नहीं, क्लॉक शायद.
Clock. Oh, you are eating. Okay, okay. क्या है वैसे आज खाने में निधि? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि निधि कुछ टेस्टी खा रही है. दाल और पापड़. ओह, इतना अच्छा है. मुझे भी दाल पसंद है. तुम्हारे साथ तो एटलीस्ट पापड़ है, मुझे तो कभी कभी सिर्फ दाल ही मिलता है. तुमने पापड़ बोला ना, मैंने कब से पापड़ नहीं खाया, अभी रियलाइज किया. मैं अभी दुकान जाऊंगी तो कभी जाऊंगी तो लेके आऊंगी. हाँ, हम लोगों के पीसी में इतना अच्छा पापड़ देते थे ना वो लोग, लेकिन सिर्फ एक देते थे मुझे, तो मैं तो 4 भी खा सकती थी. बहुत ही कंजूस थे, ऐसा मेरे दोस्त लोग बोलते थे. मैं भी बोलती थी शायद. लेकिन अच्छा, ये कुछ कुछ तो अच्छा भी था उसका. सबसे अच्छा ये हुआ कि मुझे वो मेरे फ्रेंड्स मिले पीजी पर. दे वर सो नाइस. लेकिन मैं नहीं थी, सिर्फ वो लोग ही नाइस थे. हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? स्टार्ट कर रही हो क्या स्लॉट 2? How do metals and non-metals react? In the above activities, you saw the reaction of metals with a number of reagents. Why do metal reacts with this manner? In this manner, let us recall what we learned about the electronic configuration of elements in class 9. We learned that noble gases which have a completely filled valence shell shows a little chemical activity. We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. The reactivity of elements. The reactivity of elements is a tendency to attain completely filled valence shell. The reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. Let us have a look at the electronic configuration of noble gas and some metals and non-metals. Why my heart is burning? I don't know. Heartburn. Acidity. Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. We can see from table 3.3 that a sodium atom has one electron in its outermost shell. If it loses the electron from its M shell, then its L shell now becomes the outermost shell, and that has a stable octet. The nucleus of this atom still has 11 protons, but the number of electrons has become 10. So, there is a net positive charge giving us a sodium cation Na+. On the other hand, chlorine has 7 electrons in the outermost shell, and it requires one more electron to complete its octet. If sodium and chlorine were to react, the electron lost by sodium could be taken up by chlorine. After gaining an electron, the chlorine atom gets a unit negative charge because its nucleus has 17 protons and there are 18 electrons in its K, L and M shell. This gives us a chloride anion Cl-. So both these elements can have a give and take relationship between them as follow. 281, 281 electron to sodium cation. 287, 288 chloride ion NaCl. एउटा इलेक्ट्रोन के गर्यो लागि 1 2 3 4 5 6 7 8 एउटा दिएन Na plus 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8. Formation of sodium chloride. Okay, it's okay Ima. It's okay. बोलते बोलते मैं थक ही जाती हूँ. It's okay. कुछ भी okay नहीं है. Excuse me. Helium, neon, argon, these are noble gases, metals.
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटाशियम, कैल्शियम. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटाशियम, कैल्शियम. NaMgAlKCa. Atomic number 2, 10, 18, 11, 12, 13, 14, 19 and 20. Okay. Number of electron in shell KLMN 2, 8, 2, 8, 8. Isn't it 2, 8, 18? 18. Okay. Why potassium and calcium do not follow 2, 8, 18 rule? क्या है ये गूगल? Why potassium and calcium do not follow 2, 8 and 18 rule while filling the electrons in its orbit? Potassium and calcium do not strictly follow the 8 and 18 rule while filling electrons in their shell because the filling order is determined by energy level, not just cell capacity. Okay. While the third shell, M shell, can hold a maximum of 18 electrons, it's energetically favorable for potassium and calcium to fill 4s orbit before completely filling the 3d orbitals, resulting in the configuration 28 at 1, 28 at 2 respectively. Okay. Feeling of energy level में अपनी energy level पनि छ, energy level को कुरा आउँछ. Okay. अभी तो वो लोग नहीं पाएंगे ना 4s ऑर्बिट, तो ये तो 11 में आएगा. हाँ लेकिन बता सकते हैं ना, क्लास 9 में है, भूल जाएंगे बताने से भी, लेकिन नहीं बताया तो तुम्हें ही बुरा कहेंगे. आज कुछ डे है क्या? पता तो है समथिंग इम्पोर्टेंट इज देयर. बर्थडे. आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन. Norwegian. Adventures, polar adventures. Okay. Died 1892, 1928. Arctic Ocean. Norwegian explorer who was the first to. Norwegian explorer who was the first to reach the South Pole. It's so hard. Anyways, let it be. I can't even pronounce his name. इतना difficult था. 28, 288, 281, 282, 283, 28. पोटाशियम, एल्युमिनियम, Al में ऐसे सिलिकॉन, P फॉस्फोरस. पोटाशियम का तो एक ही होगा ना. कैल्शियम का 2, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7. Okay, got it. I got it. Properties of ionic कंपाउंड. ओके, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज भी दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, इतना तो कर ही सकते हैं. ये गंदा सा फिर से वही आ गया. एक ही एक्सपेरिमेंट ये लोग 50 बार देंगे और हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा. Sodium and chloride ion being oppositely charged, attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Electrostats. हाँ, positive और negative.
force of attraction to exist as sodium chloride ion. It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but aggregates of oppositely charged ion. Granular material like sand. Granular material is sand, gravels, and crushed stones used to create concrete and other building materials. मैंने exact meaning पूछा रे. I wish I was better, but I'm not. I wish I was better. A whole formed by combining several separate elements. It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but aggregate of oppositely charged ion. Oppositely charged ion. Oppositely charged ion. It's okay, ma. It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule. Does not exist as molecule. Does not exist as molecule. What type of bond is present between molecules? Covalent. Hydrogen, yeah. Covalent, ionic. Hydrogen bonds and van der Waals. Ionic bond. Electrostatic force of attraction. Sodium chloride have ionic bond or not? They have, right? Na plus Cl minus. Yes, sodium chloride NaCl, commonly known as stable salt, has an ionic bond. If sodium chloride has ionic bond, why it is not considered as a molecule? If sodium chloride has ionic bond, why it is not considered as molecule? Yes, sodium is an ionic compound and its bond is indeed ionic. While ionic compounds are formed by a transfer of electron and electrostatic attraction between ions, they are not typically referred to as molecule. Molecules are typically defined as a group of atoms held together by covalent bonds where electrons are shared by between atoms. Okay, covalent bond नहीं है. Okay, भाई साहब मैं समझ गई. अबे, hi, if you are there. Hi, वैभव. तपाईँको त नाम भन्नु मलाई कस्तो अजीब लाग्छ, त्यसै कारण के भन्नु म. तपाईँको नाम मुन, MUN मुन अबदेखि, if you are there. We will call him Moon, okay? Not MON Moon, but MUN Moon. Nothing more. It should not be noted that sodium chloride does not exist as molecules, but aggregates of oppositely charged ions. Let us see the formation of one more ionic compound, magnesium chloride. MgCl2. Astaghfirullah. I'm sorry. Sodium and chlorine ion, being oppositely charged, attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction to exist as sodium chloride NaCl. It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule. Bond. But
aggregates of oppositely charged does not exist. A molecule with aggregates of oppositely charged ions. Let us see the formation of one more ionic compound, magnesium chloride. One more ionic compound. Let us see the formation of one more ionic compound, magnesium chloride, MgCl2. मैं आपको करना सकते हो पता Mg को 2 8 10 11 12 2 2 8 2 है ना तभी क्लोरीन को 2 8 7 17 हुन्छ Mg को हुन्छ यहाँनिर दुईटा हुन्छ 1 2 Cl2 हुन्छ नि त यहाँनिर यसमा Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 हुन्छ अर्को साइडमा भनौँ 1 2 3 4 5 6 7 यो आयो भने के हुन्छ 8 हुन्छ के हुन्छ Mg2 प्लस यसमा दुईटामा माइनस हुन्छ Cl माइनस यसमा पनि के हुन्छ Cl माइनस Mg2 प्लस हुन्छ Mg2 प्लस Cl minus 2Cl minus Mg2 plus 2Cl minus. This is minus. ओ मेरा नाम मून, तुम्हारा नाम मून नहीं है. मैंने उनको बोला. There is someone there in YouTube. His name is मुकुंदन यूपानी ना, लेकिन मैं उन्हें अच्छे से देख वो और मैं ना एक ही स्टेट से बिलोंग करती है और उनका तो MBBS भी हो चुका है ना, तो मुझे उनके नाम से बुलाने में मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, इसलिए उनका नाम कुछ तो रखना पड़ेगा ना, MUN. थैंक गॉड. तुम्हारा नाम वैभव भी है. हाय रिंचेन. मून का मीनिंग कुछ नहीं है, बस उनका नाम में है MUN है ना, इसलिए मून. बताएगी मीनिंग तो. मीनिंग नहीं है, जैसे तुम्हारा नाम शुभम के S भी है, कोई मीनिंग है क्या? नहीं ना. वैसे उनका नाम का भी कोई मीनिंग नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है बस. रिंचेन का भी शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए ना रिंचेन. इट्स रिन. रिन. क्योंकि ना पूरा नाम लिखने में भी टाइम वेस्ट होता है, तो वी मस्ट चूज शॉर्टकट. टू 8 2 Mg 2 इलेक्ट्रॉन गिव गर्यो. Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन गरेर Cl माइनस 2Cl ले 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl माइनस है ना. होना तो सही चाहिए, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Cl माइनस, और एक ही दिया है यहाँ पर. क्लोरीन है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Cl2 दुईटा सेलको यस्तो हुन्छ भनेर देखाएको. I'm really happy today. My parents agreed that I don't want to do engineering. Instead, I'll do designing. Yo, me one typical Nepali parents. Zero yippee. साँच्चै नै भन्नुभयो. कति मजा हो, कति मजा. मलाई त कस्तो हुनु नि है. तर मलाई के भन्दैन, न के गर्नु भन्छ न के नगर्नु भन्छ, के भन्दैन. म आफै गर्छु भन्छु, आफै गर्छु पनि. The compound in this manner by the transfer of electron from a metal to a non-metal are known as ionic compounds. A compound formed in this manner, the transfer of electron from one metal to a non-metal are known as ionic compounds. Or electrovalent compounds.
Ionic compounds are electrovalent, covalent, electrovalent compounds, electrovalent compounds, electrovalent compounds, electrovalent compounds, electrovalent compounds. Can you name the cation and anion present in the MgCl2? अरे Mg cation है और Cl anion. Properties of ionic compounds. Great यार. है ना शुरू? वैसे तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे. तुम्हारे पेरेंट्स मानेंगे शायद. हाय विपिन सर. हम लोग के बायो पढ़ाते हैं विपिन सर. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. अगर मैं इतना करूँगी तो फिर मैं चली जा सकती हूँ, है ना. वैसे भी 3:30 हो ही गया है, 4 से क्लास है, वैसे भी 6 तक करना है. दूसरा वाला क्लास थोड़ा इजी होगा शायद, पहले वाला क्लास थोड़ा हेक्टिक होगा. एक बच्चा है ना, वो किस क्लास में पढ़ता है? आई थिंक आई डोंट नो, मे बी 6 और 5, आई एम नॉट श्योर. 6 और 5. लेकिन उसको डिवीज़न ही नहीं आता. कितना सिखाने पर भी डिवीज़न नहीं आता. I wish I could read it, but I couldn't. Properties of ionic compound. To learn about the properties of ionic compound, let us perform the following activities. Take sample of sodium chloride, potassium iodide, barium chloride or any other salt from the science laboratory. What is the physical state of the salt? Physical state, solid. Take a small amount of sample on a metal spatula and heat directly on the flame. Repeat with other samples. What did you observe? Did the sample impart any color to the flame? Do these compounds melt? Try to dissolve the sample in water, petrol and kerosene. Are they soluble? Make a circuit as shown in figure 3.8 and insert the electrode in a solution of one salt. What did you observe? Test the other salt sample too in this manner. What is your inference about the nature of this compound? Good conductors. आज कौन से क्लास के बच्चों को की क्लासेस है? आज ना 9 और 10th के मर्ज है और एक तो मिक्स बैच है. मिक्स बैच में 4 से 7 तक है शायद. या फिर नहीं हो 9 और 10th का मर्ज. अगर मर्ज नहीं हुआ तो मेरे लिए थोड़ा कम पड़ेगा प्रेशर. मर्ज किया तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा. वैसे मैं कुछ डिसाइड ही नहीं करती. भैया का जो ऑर्डर आता है वही करना पड़ता है. A conclusion reached on the basis of evidence and reasoning.
make a circuit as shown 0.3.8 and insert the electrode into a solution of one salt. What did you observe? Test the other salt sample into the two in this manner. What is the inference about nature of this compound? Melting and boiling point of some ionic compounds. NaCl को melting point 1074, lithium chloride को 887, calcium chloride को 1045 to 850. केल्विन है यो चाहिँ केल्विनलाई सेल्सियसमा गर्दाखेरि के गर्छ भन्दा डिग्री सेल्सियस हैन माइनस केल्विन छ डिग्री सेल्सियसमा गर्दाखेरि 2850 माइनस 273 इक्वल्स डिग्री सेल्सियस आउँछ। 10 मा 3 घटाउँदाखेरि 7, 15 मा 7 घटाउँदाखेरि 15 मा 7 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ? 15 मा 7 माइनस गर्दाखेरि न ए 15 छैन हौ, एक गयो नि त्यता। 13 मा 10 मा 3 घटाउँदाखेरि 7, 14 मा 7 घटाउँदाखेरि 7 है, isn't it? 14 minus 7, 14 minus 7, 7 ही तो यहाँनिर 6 छ, 6 minus 2, 4, यहाँनिर 6 छ कि 7 छ हौ, एक त गयो नि यहाँनिर 7 छ हौ, 7 मा 3 2 घटाउँदाखेरि यहाँनिर 5 हुन्छ, 2577। मेरा आंसर आया ना यहाँ पर 2577, 7 7 minus 2 5 2577 ठीक है। Convert 2800 and 200 is convert 2850 Kelvin into degree Celsius. 2850 kelvins is equal to 2576.85 degrees Celsius. मैंने ना अप्रॉक्स लिया है, एग्जैक्ट लिया है मैंने, 273 लिया उन 5, तो उन लोगों का आया 2576, गूगल का आया 2576, मेरा आया 2577 क्योंकि मैंने पॉइंट से उधर का तो लिया ही नहीं। एक्स्ट्रो खतरनाक कैल्शियम ऑक्साइड का लगी था। Boiling point. You may have boiling point में ज़्यादा रहता। You may have observed the following general properties for ionic compound. Physical nature. Ionic compounds are solid and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ion. These compounds are generally brittle and breaks into pieces when pressure is applied. सही है। एग्जाम में आउँछ लेखिरहेको छ कसले, एक्जाम लेखेछ एग्जाम में, एग्जाम किसी ने ना EXAM एग्जाम को, ये मेरा बुक नहीं है ओके, एक स्टूडेंट का है, उसने मुझे दिया है पढ़ने के लिए। इस एग्जाम का ना EXAM लिखते हैं ना, इसने लिखा EGG, एक हाइफन लगा के JAM जाम लिख दिया, एग एंड जाम, खाने वाला एग एंड जाम, लेकिन ये लिखना चाहता है एग्जाम ही, और यहाँ पर नीचे ना सैम लिख दिया, एक्सएम एग्जाम। अच्छा है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, या फिर स्पेलिंग ही नहीं बताओ उस बच्चे को। आज इमा खुश लग रही है, लग तो यही रहा है ना, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर अब एक टाइम बाद ना, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना, कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा ना, तब बताऊंगी कि मैं उस टाइम ये सब फेस कर रही थी। फिर तुम लोग बोलोगे कि हाँ तब भी फेस कर रही थी, लेकिन तुम तो खुश लग रही थी तब। यू विल से दैट। फिजिकल नेचर, चलो अभी पढ़ते हैं फिजिकल नेचर। आई थिंक शुभम को तो थोड़ा थोड़ा पता है, मैं अभी कुछ दिन से सैड ही चलूँगी कुछ दिन तक, लेकिन उसे भी मैंने नहीं बताया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो उसे पता होगा। फिजिकल नेचर हो गया क्या MBBS में एडमिशन? हाँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन कोई
कोई बात नहीं, प्राइवेट ही सही, कुछ तो मिला है ना। और कल ही तो आया था अराउंड 6 के आसपास, मेरिट लिस्ट आउट हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ वैभव। Physical nature. Ionic compounds are solid and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. It's okay, ma. Let them think what they want to. Ionic compounds are solid and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. हाँ हो गया ठीक है. Roast ना. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Melting and boiling point. Ionic compounds have high melting point and high boiling point है ना. High melting and boiling point. This is because considerable amount of energy is required to break. Energy is required to break the strong interionic attraction. Solubility. Electrovalent compounds. Ionic compounds are generally soluble in water and insoluble in such solvents such as kerosene, petrol. Why electrovalent compounds? Why electrovalent compounds are not soluble in petrol and kerosene? Why electrovalent compounds are not soluble in petrol and kerosene? These solvents lack the ability to break the strong electrostatic force holding the ions together in the compound. Non-polar solvent. मेरा वो ठीक ही था, non-polar solvent है ना. Non-polar. What are polar solvents? Polar solvents. Substances with molecules that have a permanent electric dipole moment due to uneven electron distribution. Solvent. Polar solvents. Molecules that have permanent electric dipole moment. Permanent electrical dipole. Electrical dipole. OMENT moment. Molecules that have permanent electrical dipole moment. Polar solvent. Molecules that have permanent electrical dipole moment due to uneven electron distribution. Okay, my brother is calling me. Wait, हाँ भैया कॉल कर रहे हैं. वन में लगाया था क्या, 2 में लगाया था रिचार्ज, 2 में. भैया की क्लासेस में जो बच्चे हैं ना, 2, उन लोग अगर क्लासेस में आए तो वो लोग अभी स्कूल में है ना, तो उन लोगों को घर ही भेज देना चाहिए, क्योंकि उन लोग के पता नहीं कोई किसी का डेथ हो गया है. ऐसा भैया नहीं बोला, मुझे उन लोग को ऐसा बोलना है. भैया थोड़ा लेट आते हैं ना, मैं जल्दी जाती हूँ क्योंकि चाबी मेरे पास ही होता है क्लास की. एक्सक्यूज मी.
Electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene oil, kerosene and petrol. Okay, polar solvent molecules that have permanent electric dipole moment due to uneven electron distribution. Due to uneven electron distribution. This means one part of molecule carries a partial negative charge while the another carries a partial positive charge, H2O. Because these opposite charges, polar solvents readily dissolve polar and ionic compounds. Polar solvent readily dissolves polar and ionic compounds. Polar and ionic compounds like dissolves like. This opposite charges polar solvents readily dissolve polar and ionic compounds, following the principle like dissolves like. Like dissolves like. Okay. Electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene and petrol. Kerosene र petrol मा insoluble हुन्छ, water मा के हुन्छ generally soluble in water. Generally soluble in water. Solubility. Electrovalent compounds are generally soluble in water. Generally soluble in water. I don't like it. I hate her. It's okay. अच्छा है यार, आजकल तो मेरे पास झाड़ू बाम है ना, जब भी आई पेन करता है ना मैं ऊपर से लगा देती हूँ, फिर ये इतना बर्न करता है कि ना मेरा पेन ही गायब हो जाता है. आज कौन सी क्लासेस की मैंने बताया मैथ्स का आंसर तो मैंने पहले भी दिया. पता नहीं यहाँ पर ना मेरा वो हो गया है, शायद चैट स्टॉक हो गया है, कोई बात नहीं, इसलिए मुझे ऊपर का ना वो वाला दिख रहा है. Condition of electricity. The conduction, okay, conduction of electricity. Okay, polar solvent को ना dissolve polar and ionic compounds, 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 polar में dissolve हुन्छ, like dissolve like. मुझे क्लास 10 के बच्चों को ना पढ़ाना चाहिए एमबीबीएस करते करते. ए मत वो ही, मुझे लगा कि तू चला गया है. कितने दिनों के बाद देखा मैंने अहमद को. नीट का स्कोर बता. सब लोग मेरे तो पूछते रहते हो तुम लोग, अपना तो नहीं बताते. जब अपना बताने की बारी आई ना तो सब लोग भाग जाते. इवन सागर भी भाग गया, अहमद भी भाग गया था. भाई अब बता, योर टर्न नाउ. बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल, मुझे क्लास के लिए भी पढ़ना है. अहमद जल्दी बोलो फास्ट. 414. क्या मैं विंस्टन को जानता हूँ? क्यों नहीं जानते, ये अहमद है. ये ना एग्जाम से पहले आता था, मैं इसको अच्छे से जानती थी. मुझे इतना ज्ञान मिलता था ना इस्लाम का, मुझे इतना गुस्सा आता था इसके ऊपर. 414. तो तुम ड्रॉप ले रहे हो या फिर तुम्हें कोई मिल रहा है कुछ भी, लाइक कोई भी कोर्स मिल रहा है, बैंस या फिर बीडीएस ऐसा कुछ? हाँ ऑब्वियसली याद होगा. मुझे जो जो ज़्यादा इरिटेट करते हैं ना वो लोग ज़्यादा दिमाग में बैठता है शायद. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नथिंग, नो चांस. तो ड्रॉप ले रहे हो? मिलेगा. ओके नहीं मिलेगा, अच्छी बात है ना. दिल्ली वालों को तो ज़्यादा, दिल्ली में मोस्ट ऑफ द किड्स ज़्यादा प्रिविलेज होते हैं, ऐसा मुझे लगता है. शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन छोड़ो अभी मैं पढ़ती हूँ. हाँ फिर इतना कंप्लीट करके ना मैं देखती हूँ तुम कहाँ गए थे, तुम बताते रहना अभी तक, तब तक मैं यहाँ पर पढ़ लेती हूँ. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. Solubility. Electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. Conduction of electricity. The conduction of electricity through a solution involves movement of charged particles. Movement of charged particles.
The conduction of electricity through a solution involves movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrode. Ions moves to opposite electrode when electricity is passed. When electricity is passed through the solution. Ionic compound in solid state do not conduct electricity. Do not conduct. Solid state do not conduct electricity because movement of ion in the solid is not possible due to their rigid structure. Due to ionic compounds ionic compounds, electrovalent compounds conduct electricity in molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to heat. Electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ion are due to the heat. Okay, ionic compound in solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. Charged molten state, since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to heat. Thus, the ion moves freely to conduct electricity. Salt. Ionic compounds, example NaCl, they are hard, have a high melting and boiling point, soluble with water but not in kerosene, etc. They conduct electricity only when in the molten state, dissolved. Okay. Solid. Take a small amount of sample on a metal spatula. This compounds melt. Does this compound melt? Try to dissolve the sample in water. Puller. Make a circle. Okay. Hi Kim Jong-un. Does NaCl dissolve when heated? Yes, NaCl, sodium chloride or dissolves in water when heated. Does NaCl melts when heated? Yes, NaCl, sodium chloride, also known as table salt, melts when heated. Its melting point, which is approximately. Okay. What happens if you heat NaCl with the heat off, with the energy of, I don't know. It will get hotter, but it won't melt or boil. It will not burn. It will boil or melt. Let me see. Hot. Take a sample of sodium chloride, potassium chloride, barium chloride. When we burn sodium chloride, which color is generated? Bright golden yellow. Sodium chloride is heated in a flame. It produces bright yellow color according to chemistry source. This is due to excitation of sodium ion in the salt, which then emits yellow light as they return to the ground state, bright golden yellow.
potassium iodide. When we heat, what kind of color is generated by potassium iodide and barium chloride? Potassium iodide typically produce a lilac. Wow. Lilac or purple. Barium chloride, green color. Burning of potassium iodide. मुझे देखना है. Is not flammable and does not burn heated. Okay. Heating of potassium iodide. अभी मैं चली जाती हूँ. मेरा हो गया है. I think मेरा चैट भी वो क्या बोलते हैं उसे, स्टक हो गया है ना. Heating of potassium chloride, iodide. Okay. Heating of potassium iodide generates which color? I know it's lilac and oh, I saw. Now I'll go. It's already 15:47. मैं चाय पीऊंगी, मस्त जाऊंगी. Bye bye. When will you be back? I have 2 classes, so probably at 5, 6. I usually take extra time to complete all those stuff. So maybe 6:20 or 6:30. Yesterday I came back at 6:25, I guess, or 6:28. But we'll study tonight, okay? I really want to. I have so many backlog. Again, I created backlog in kinematics. Hehe. It's not funny, but I have to complete it anyways. अभी के लिए bye bye. Bye. सिर्फ शुभम ने ही बाय बोला. मेंबर्स ओनली लाइव में तो ना शुभम हर में वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वो वाला बाय. ओम शांति ओम वाला बाय. मैं व्हाट्सएप में वो पोस्ट कर दूंगी वो क्वेश्चन जो है. हाँ ये वाला ओम शांति ओम वाला बाय. हाथ ऊपर करके बाय करते हैं ना, जैसे हम लोग बाय करते हैं ओम शांति ओम, इतना ऊपर करके हाथ. हाँ. बाय स्क्रिबल, बाय किम जोंग उन, बाय अहमद भाग गया ना. बाय शुभम, बाय एवरीवन. कोई तो नहीं है ना उसके अलावा, इतने लोगों के अलावा. आई डोंट थिंक, एक तो मैं ही हूँ. अच्छा ओके, अब मैं चली गई.